Okay, so today we'll do this underfitting, overfitting problem. So overfitting, what is overfitting? So when the model perform well on training data, but poorly on new data. When the model perform well on training data, but poorly on new data. It has learned too much noise or details from the training set. Overfitting, for example, this one. This is example of overfitting. This one. You can see like it we have given some data to it, but this line is like sticking to the data. All right. But this line should not be like this. It is very sticking to the data. So it should be like this. So that whenever you put some training testing data, it should have less distance from the data and the line. Okay, so it is fitting very over on our training data. That is called overfitting. What is underfitting? When the model is too simple and fail to capture the pattern in the training data, leading to poor performance on both training and testing data. You can see this, and this is another kind of problem where your data we have our data, but instead of making this line, it is making a simple straight line, which is not even covering this area, and some of this area. Right? We can say it's underfitting. So in this kind of problem, when the model is too simple and fail to capture the pattern in the training data, lead to poor performance on both training and testing data. This will even not perform on the testing data also. It's not good for training also, and it was either testing. So this kind of graph we don't need. Either we don't need this kind of graph. What we want is good fit. Okay, it should not overfit too much, and it should not either go underfitting. It should be very proper, touching. It should go near the points, not at each point like this, and not away from the each point like this. Okay, so bias variance, the relation of underfitting and overfitting. So how does it affect our output? Let's see that. So here comes the one terminology, which is biased variance trade-off. So in the context of machine learning, bias and variance are two key sources of error that contribute to the overall performance of the model. Understanding the relationship between bias, variance, their impact are overfitting, underfitting, essential building effective models. So what is bias? First of all, let's see that. Definition: bias refers to the error introduced by approximating a real world problem, which may be complex by a simplified model. So high bias, what is the meaning of high biasing? A model with a high bias makes strong assumption about the data. It is usually too simple and does not capture the underlying pattern of the data well, leading to underfitting. So this problem arises, the high bias, due to the underfitting, due to this one. If your model is making an underfitting, it will be definitely giving a high bias. High bias means lot of wrong answers. Okay, it will not give a appropriate answer. It will give a lot of wrong answers. That is high bias. Using a linear model to fit a highly non-linear relationship result in high bias. For example, this one, if your
if your data needs a linear model but you are using a non-linear relationship, result in high bias. It is saying linear model. You are using a linear model to fit a highly non-linear relationship. Your data demands a line which should be non-linear, but you are using a linear data. In that scenario, it will be underfitting and it will give a high bias, means lot of wrong answers. Okay, yeah. Okay, so what is variance? As we know, variance is a deviation from the mean, right? Variance. So variance refers to the model sensitivity to small fluctuation in the training data. A model with a high variance pays too much attention to the noise in the data rather than the signal. High variance. Whenever high variance happens, a model with a high variance is usually too complex and captures the noise along with the underlying pattern, leading to the overfitting. So with the overfitting, the problem arises of the yes, with the overfitting we get a high variance problem. What is high variance? A very complex model like an high degree polynomial that fits the training data perfectly but performs poorly on the new and unseen data. So for example, if we take example of this, you have given some data to it, but this data which you were using was a training data. Okay, but suppose now you give a new data which is, you can say this is a testing data, right? So it will not perform very good in the testing data. So it will give us a high variance. All right. So if you see your new data comes, then there will be a lot of difference between this, our new data and this line. That is a high variance. Your answers will be correct, but not too accurate. Okay, it's a accuracy problem, and here it's a classification. Almost you can say that it's a underfitting will not actually is a good idea. We have to balance this up. Okay, so tell me, uh, this high biasing is a result of which one? Underfitting or overfitting? High biasing. Underfitting. Okay. High biasing means underfitting. Yeah. Okay. What about if our data is giving a high variance? It's a problem of what? What's the root cause? High variance. Yeah. Tell me. High variance.
High variance is caused due to what? High variance means points are away from the each other. It may cause by overfitting. Yes, right. Okay, now let's see the graph of these bias and various graph. Okay, so we have some graph over here. Okay, this is the perfect diagram. Okay. Okay, so what should be our goal? This is the main idea. The goal of machine learning model is to achieve low bias and low variance. All right. तो हमें लो बायसिंग भी लो रखनी है, मतलब कि हमारा जो अंडर फिटिंग भी कम से कम होना चाहिए, और लो वेरिएंस रखना है, मतलब कि ओवर फिटिंग भी कम से कम रखनी है। ठीक है, बट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू। तो हाई बायसिंग हो गई और लो वेरिएंस हो गया, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ। हाई हाई बायसिंग एंड लो वेरिएंस, दिस वन। High biasing and you can say low variance, it means it is talking about the this graph, right? This graph। तो यहाँ पे देखो, अगर आपकी बायसिंग हाई है, अंडर फिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और ओवर फिटिंग थोड़ी कम हो रही है, तो आपका आउटपुट ऐसे आएगा, जहाँ पे आप देखोगे कि आपका टारगेट मिस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बायसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका टारगेट यहाँ मिस हो रहा है पूरा। देखो, तो बायसिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सही करना होगा। हाई बायस हुआ कि आपका टारगेट मिस हुआ, दोनों ग्राफ में देख लो, टारगेट मिस हो रहा है। तो हाई बायसिंग तो आपको अवॉइड ही करना है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि हाई बायस लो वेरिएंस, द सिंपल मॉडल्स with high bias may underfit the data. They have a large error on both training and testing data because they fail to capture the underlying structure of the data. Okay, तो अगर लो बायस है और हाई वेरिएंस, लो बायस हाई वेरिएंस, मतलब इसकी बात हो रही है। थोड़ा बहुत डेटा फिट हो रहा है, अंडर फिटिंग नहीं हो रही, थोड़ा बहुत फिट हो रहा है, और जो हम बोल सकते हैं कि ओवर फिटिंग बहुत ज़्यादा है, पर ओवर फिटिंग बहुत ज़्यादा है पर डेटा थोड़ा बहुत फिट हो रहा है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारी अंडर फिटिंग बहुत कम है, जो ओवर फिटिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऐसा आपको अचीव होगा। ये थोड़ा बहुत तो ठीक दिख रहा है, थोड़ा बहुत, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, देखो, आप बायसिंग लो करते ही आपका टारगेट पे वैल्यू आने लग गया। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। और इसमें क्या होगा कि आपका डिटेल देख लेते हैं कि लो बायस हाई वेरिएंस में कॉम्प्लेक्स मॉडल विद लो बायस में ओवर फिट द ट्रेनिंग डेटा। लो बायस मतलब कि
जो हमारी अंडर फिटिंग थी, प्रॉब्लम अंडर फिटिंग, वो थोड़ी कम हो गई। अब थोड़ा डेटा को फिट करने लग गया, बट में ओवर फिट द ट्रेनिंग डेटा। they perform very well on the training data but poorly on the test data। ठीक है, हो सकता है ट्रेनिंग डेटा पे थोड़ा अच्छा खासा पकड़ हो जाए बट टेस्टिंग डेटा पे इट्स पुअर, सट बिकॉज दे कैप्चर द नॉइस अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग पैटर्न। ट्रेनिंग डेटा को ही बहुत ज़्यादा पकड़ लिया उसने। तो सबसे अच्छा इसमें कौन सा माना जाता है, दैट इज वी हैव टू मेक अ गुड कॉम्बिने गुड बैलेंस ऑफ दिस हाई बायस वेरिएंस। ऑप्टिमल मॉडल होगा, द आइडियल मॉडल स्ट्राइक्स a balance between a bias and variance, capturing the underlying pattern without overfitting the noise। तो यहाँ पे तो मुझे एक ही दिख रहा है, that is low bias। लो बायस मतलब आपकी अंडर फिटिंग भी जो है वो भी बहुत कम है, लो वेरिएंस, और जो ओवर फिटिंग है वो भी आपकी बहुत कम है। ठीक है, दोनों ही कम है इसमें। तो ऐसा कुछ अचीव करना है आपको। ठीक है, दोनों ही कम करने हैं, आपका बायसिंग भी कम करनी है, आपको अंडर फिटिंग भी कम करनी है, और आपको ओवर फिटिंग भी थोड़ी कम करनी है। मतलब बीच का चीज चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा ऐसा है, ठीक है, आपका डेटा अगर ऐसा है, ये वाला डेटा, ये वाला, तो आप चाहोगे कि आपका बहुत ज़्यादा अंडर फिट ना हो जाए, ऐसे कि सिंगल लाइन आ जाए, और ना कि आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा हर पॉइंट को टच करके जाए। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, जो कि इस डेटा को ठीक ठाक ग्रिप करके चले बस। द ग्रीन वन इज अ गुड फिट। और ये करने के लिए आपको अपने एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से ट्यून करना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर। तो ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग अकर्स व्हेन द मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर अंडरलाइंग पैटर्न। हाँ, दिस इज वी हैव डन। ओके, स्ट्रेटजीज टू एड्रेस बायस, जब हो जाए तो हाउ टू एड्रेस इट। बायसिंग कैसे रिड्यूस करनी है, बायसिंग मीन्स आपकी जो अंडर फिटिंग है। यूज मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल मूविंग फ्रॉम लीनियर टू पॉलिनोमियल। यस, आप पॉलिनोमियल मेथड यूज करें, ओके, बजाय लीनियर के पॉलिनोमियल। दिस इज लीनियर इक्वेशन सर। फ्रॉम मूविंग लीनियर टू पॉलिनोमियल मॉडल। विच वन? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन सर, विच वन? यूज मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल मूविंग फ्रॉम लीनियर टू पॉलिनोमियल। ज़्यादा ज़्यादा पॉलिनोमियल यूज करें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस पॉलिनोमियल्स। इनकॉर्पोरेट मोर फीचर्स और यूज फीचर इंजीनियरिंग। थोड़ी सी डेटा की फीचर इंजीनियरिंग करके वही
फीचर्स यूज करें जो कि विच इज़ वेरी रेलिवेंट. रिड्यूस regularization. This we will cover in next of like in further videos. To reduce variance. Variance कैसे reduce करना है? What is variance? Variance happens due to the overfitting. पॉलिनोमियल इक्वेशन यूज करते हैं जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है. हाँ, वही यूज करने के लिए वहां पे बोल रहा है ना, टू रिड्यूस बायस. मतलब डेटा के अकॉर्डिंग आपको देखना है. अगर इट इट रिक्वायर्स दी जो जब हम अपना ट्रेनिंग डेटा प्रिपेयर करते हैं. हाँ, बेसिकली भी अपना जब हम मॉडल तैयार करते हैं. टू रिड्यूस वेरिएंस. Okay, to reduce variance, what we can do is use simpler model like reducing the degree of polynomial. Overfitting से बचने के लिए you have to use simpler model, reduce the degree of polynomial. Regularization technique like lasso, ridge and elastic increase the size of the training data. जितना आपका डेटा ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही फिट अच्छे से नहीं हो पाएगा. दैट इज़ व्हाट वी नीड. ठीक है, हमारी जो लाइन है अच्छे से फिट नहीं हो पाएगी. दिस इज़ व्हाट वी वांट. तो फिट करना भी नहीं है. यूज टेक्निक लाइक क्रॉस वैलिडेशन और ट्यून पैरामीटर टू फिक्स इट. Summary is the underfitting is linked to the high bias. As a result, in poor performance in both training and test data. Overfitting linked with the high variance and result in excellent performance on training set, but poor generalization to the new data. So bias variance trade-off is central to find the right balance where the model is complex enough to capture pattern, but simple enough to generalize well to new data. Okay. Let's move to the now unsupervised learning. First of all, let me show you. Hmm. Okay, what is unsupervised learning? तो जैसे फॉर एग्जांपल अनसुपरवाइज लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल इज कोरोना. ओके. अब कोरोना के लाइक वी नो दैट वी हैव अ लॉट ऑफ वायरस, लॉट ऑफ वेरिएंट ऑफ वायरस. और हम उसके न्यू 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 वेरिएंट उसके आ रहे थे, तो वी डोंट नो द एक्चुअल नेम ऑफ दैट. तो उसके लेबल में हमको पता नहीं थे, नेम पता नहीं थे. ओनली जस्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स फीचर, कितना फैटल है, कितना प्रोटीन है उसमें, दैट ऑल दीज थिंग्स वी वर क्लासिफाइंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है. तो इन डेटा वेयर यू डोंट हैव लाइक लेबल, यू कैन से इट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. ओके. तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वी कैन से unsupervised learning is a type of machine learning where the model is trained on data
विदाउट लेबल, ठीक है, जहाँ पे लेबल हमारे पास नहीं होता. The goal is to find hidden pattern, structure, and relationship in a data. For example, let me show you the unsupervised learning. Yes, we can understand in this way also. Here we had a lot of shapes, which is classified according to the its shapes and colors. Okay, we actually didn't knew the name of these shapes. We just classified them in a different groups. How does the data look like? Data set, a unsupervised. Let me show you. So this is the, we can say this is the data of a car engine, how much render it is having, how much horsepower. So, but this we do not have the name of the particular engine. So we just have to keep them in a group. Each group should have a like engine, right? So this is also, you can see these are the employees. So we do not have actually the name. So we will just group them, cluster them in a singular kind of a graph, similar kind of groups. So usually it's talking about the unlabeled data. Okay, so we do not have the names or target value in our data. In that scenario, तो we use this. जैसे बहुत बार वायरस के केस में ऐसा अक्सर होता है कि वायरस का हमें, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं, इनोवेशन हुई नहीं, हमें नाम नहीं पता उसका, तो वी जस्ट कीप ऑन सर्चिंग, और जैसे जैसे हमको जो चीज़ें मिलती है हम उसको एक एक क्लस्टर में उसको डालते जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने कैन से ब्लड रिपोर्ट देखी और यू सी कि कुछ आपको थोड़े बहुत लाइक आपको रेड रेड वायरसेस मिले ब्लड्स में, और आप कह सकते हो कि कुछ हमको ग्रीन मिले. आपको नाम तो नहीं पता इनके, आप क्या करोगे? इनको इनको अलग अलग ग्रुप में आप रख दोगे, राइट? ग्रीन वाले अलग और रेड वाले अलग, लाइक दिस. मे बी दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड समथिंग एल्स, और जो ग्रीन वाला विल बी कॉल्ड समथिंग एल्स, राइट? यू कैन से इट्स ग्रीन, और this could be called red, like this. So unsupervised data, unlabeled data, like in unsupervised learning, the data set consists of input data without corresponding label.
तो पैटर्न हमें खुद बना के, डेटा के अंदर ग्रुप्स बना के, पैटर्न बना के डेटा को समझना पड़ता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन से suppose you have a data set of a customer transaction with feature like the amount spent, frequency of purchase, product categories. The goal might be group similar customers together without predefined categories. तो जिस ने कुछ पर्टिकुलर सामान खरीदा है, उन लोगों को एक ग्रुप में रखेंगे, और ऐसे वी यूज दिस अ लॉट इन द रिकमेंडेशन सिस्टम। आप यूट्यूब का बोल लो, यूट्यूब का, या आप अमेजोन का बोल लो। अगर आपको कोई भी आप सामान खरीदते हो उसका रिकमेंडेशन मिलता है, तो दैट इज ड्यू टू दिस वन। यू माइट बी फॉलोइंग इन वन काइंड ऑफ अ ग्रुप। 1 minute। टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। So clustering, their dimensionality reduction, we have two types। Clustering मतलब कि group together, like clustering involves grouping similar data points together based on the feature। For example, grouping customer into segment based on purchase। और कॉमन एल्गोरिथम हमारे पास इसमें है कि एक तरीके के मींस क्लस्टरिंग इसी मेथड पे काम करती है। hierarchical clustering, DBSCAN, these works on this clustering way। These are all good for the data in which you do not have the labels। Dimensionality reduction में we can say involves reducing the number of features in a data set where preserving as much as information as possible। Compressing for example, like compressing a large data set into a fewer variables for a easier visualization और analysis। तो ये भी एक पार्ट है एक तरीके से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। बट बट एग्जांपल इज कि वी कैन से compressing a large data set into fewer variables for easy visualizations or analysis। A common algorithm is like we have PCA, which is used to reduce the features, T distributed stochastic neighbor embedded t-SNE autoencoder। These are the some algorithm which we will cover in detail in future।
Clustering in details. K means clustering, what it is. Hierarchical clustering, what it is. पीछे क्या होता है t-SNE and the application of. Let's see that in detail. K means clustering. I think I will do it in detail, but here it is just an overview. K means partitioning the data into K cluster, where each data points belong to the cluster with the nearest mean. The algorithm iteratively adjusts the clusters at centroid and assign. So in K means what happens? We make clusters of different data, and we actually have the centroid in the middle. This centroid is a deciding factor कि इसके ग्रुप में कोई भी डेटा पॉइंट दे रखा है. ओके, यू कैन सी सम डेटा पॉइंट्स. तो वो किस क्लस्टर में जाएगा वो कैसे डिसाइड होता है? दैट डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा एंड द सेंट्रॉइड. जो जिसके जितने पास रहेगा, जो डेटा दोनों सेंट्रॉइड के सबसे पास जो रहेगा, दैट विल बी असाइन टू दैट पर्टिकुलर cluster. This is how K means work. So we have 3-4 steps over here. काफ़ी डीप में अभी हम करेंगे in the upcoming videos. Market segmentation is example, image compression, anomaly detection. So these are the some use cases application of this K means clustering. We will use this in our data. Hierarchical clustering, first of all, let me show you an example. See, this is hierarchy. So how it works? Hierarchical clustering builds a tree of clusters, either by starting with individual data points and merging them, or by starting with one large cluster and splitting it divisive. See, शुरू के कुछ clusters जो नीचे बन रहे हैं, that is alike animals, like bird के साथ, four leg animal 4 leg के साथ, और insect के साथ. फिर उसके भी उनमें से भी birds and animals are like these both are vertebrates which has the spine. तो वो इसकी कैटेगरी में यहाँ पे आ गया. ओके, दिस वन. और 3 more than 3 legs, उसमें स्पाइडर इंसेक्ट्स ये वाले इंसेक्ट कैटेगरी में आ गए. बट बोथ ऑफ दीज क्लस्टर्स आर द एनिमल्स. तो एनिमल के क्लस्टर में वो दोनों आ गए. तो दिस इज हायरार्किकल. ओके, यहाँ पे सिर्फ ग्रुपिंग नहीं हो रही है, ग्रुपिंग के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी है. Hierarchical structure clustering builds a tree of clusters either by starting with individual data points and merging them. Example है organizing documents, social network analysis. आपका जो सोशल नेटवर्क फेसबुक पे जो फ्रेंड्स होते हैं which are linked together, that is example of this one.
Dimensionality reduction in detail, like PCA. PCA reduces the dimensionality of data by projecting it onto the direction. Principal component. Principal component is one line that captures the most variance. It helps in visualizing high dimensional data, speeding up machine learning algorithm. So visualization of large data set देखने के काम आता है ये noise reduction, feature extraction. Okay. Let me do you one example. जैसे कि for example आपका डेटा यहाँ पे dispersed है. Right now it is two dimensional data. ठीक है, इसको one dimensional पे कैसे लेके आए? You'll make a line which you call principal component. और आप इस सारे डेटा को इसको प्रोजेक्ट करोगे इस पर्टिकुलर लाइन में. ओके, so you can say कि all the information of 2D is now stored in one dimensional data. You just need one line. Most of the compression जो होती है we can like WhatsApp पे pictures की जो compression होती है we can say it's example of principal component. आपका डेटा अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा है या बहुत सारे डायमेंशन है 5D या 6D तो उसको 2D में लाने के लिए वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट क्योंकि 5D 6D वी कैन नॉट सी ऑन द स्क्रीन. t-SNE, it is a technique that reduces dimensionality while maintaining the structure of data at multiple scale. It often used for visualizing high dimensional data in 2 or 3 dimensions. जैसे कि visualization cluster in complex data such as gene expression data. Here the structure of data is maintained. t-SNE. Let me show you. t-SNE. So these are the data which is in high dimension. So with the help of t-SNE, we can compress it. So what is the application? What's the real use of unsupervised learning? Anomaly detection, like identifying unusual data points that don't fit well in the rest of the data, like fraud detection. Fraud detection like in the transaction. बहुत सारी जगह fraud detection के काम आता है.
अनयूजुअल बिहेवियर ट्रैक करने काम आता है। रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने का काम आता है, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब हो गया, आपका मूवी हो गया, नेटफ्लिक्स, ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हो गई, मार्केट बास्केट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर। आप क्या चीज खरीदते हो उसके अकॉर्डिंग यू आर ग्रुप टुगेदर। ओके, मॉडल आपने बना दिया, पर मॉडल की इवैल्यूएशन कैसे करें कि कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना बेकार काम कर रहा है। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, हाउ वी कैन नो इट। मीन स्क्वायर तो हमने कल डिस्कस किया था वैसे। ओके, जस्ट 1 मिनट। अब फ्यूचर फ्यूचर सेशंस में हम लोग सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के जितने एल्गोरिथम्स मैंने दिखाए हैं, वो दैट एल्गोरिथम वी विल यूज ऑन द रियल डेटा। ओके, कि इन डेटा साइंस हाउ इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, that will be coming in the next session. तो अभी आई एम जस्ट गिविंग द theoretical पार्ट। हाँ, इसकी कोडिंग भी होगी, ऐसा नहीं कि theoretical नहीं है। इसकी कोडिंग भी होगी। हम रियल डू डेटा साइंस वी आर डूइंग ना, सो डेटा लाइक वी हैव टू परफॉर्म ऑन द डेटा ऑल्सो ना। So I will be taking some data on that we will perform this. So theory is also needed because once we will make data, उसमें ये classification, accuracy और everything will be there, right? Like linear regression का for example, अगर if I do the linear regression, तो वहाँ पे accuracy और ये सब भी होगा, तो that's why theoretical part पहले कर लेते हैं, उसके बाद we will just jump to the coding part. अभी बीच में शुरू कर दूंगा तो फिर ऐसे फॉर एग्जांपल दिस वन कि यहाँ पे आया के मीन्स और हायरार्किकल कर दूंगा तो फिर स्टार्ट फिर ये रह जाएगा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड ऑल दिस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग नेक्स्ट है, वो रह जाएगी, है ना। तो दैट्स व्हाई लेट्स कवर और द थ्योरेटिकल, देन विल मूव टू द कोडिंग। कोडिंग पार्ट का कोड इतना ज़्यादा ज़्यादा नहीं होता, थियोरेटिकल पार्ट बहुत मैटर करता है। Okay, model evaluation metrics are used to access the performance of machine learning model. These metrics help to determine how well the model is making the prediction. Model से बना देना उससे काम नहीं होता, it should also perform good. So accuracy measures the proportion of correctly predicted instance, both true positive and true negative, out of the total instances. तो एक्यूरेसी निकालने की नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एक्यूरेसी।
Okay. And then we have use case. Accuracy is commonly used in classification tasks. Balance, for example, the number of instances in each class is roughly same. If a model correctly predicts 90 out of 100 instance, its accuracy become 90%. तो accuracy is very important. आपका मॉडल एक्यूरेट होना चाहिए. अगर नहीं एक्यूरेट हो रहा तो हाई वेरिएंस हाई बायस का हमने चीज़ किया है. वी विल सेट, वी विल ट्यून आवर मॉडल. प्रिसीजन क्या होता है कि प्रिसीजन इज द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इंस्टेंस टू टोटल इंस्टेंस प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव. तो प्रिसीजन यू कैन से ट्रू पॉजिटिव. तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव पॉजिटिव. सिर्फ ट्रू पॉजिटिव की जो एक्यूरेसी है, और हम वी कैन से कि परसेंटेज, वी कॉल इट प्रिसीजन. लेट मी शो यू द confusion matrix also. हाँ. So this is actual positive negative, this is predicted positive negative. फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे समझे इसको कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल मतलब कि हमारे डेटा में जो हमारे पास डेटा था उसमें मे बी यू कैन से कि वन डिजीज काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं और ये बता रखा है कि उस इंसान को वो डिजीज है या नहीं है. ठीक है. तो अगर डिजीज है तो पॉजिटिव वाली साइड पे है, अगर नहीं है तो नेगेटिव वाली साइड. अब हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया. वी हैव ट्रेन आवर मॉडल. नाउ आवर मॉडल इज प्रिडिक्टिंग. ठीक है. तो प्रिडिक्शन में उसने अगर आदमी को सच में इट इज़ हैविंग डिजीज, तो अगर आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है उसको उसको डिजीज है, तब तो ट्रू पॉजिटिव में काउंट होगा. पर अगर सच में उसको डिजीज है और आपके मॉडल ने बोला नहीं है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव. और उसके बाद अगर आपके डेटा में किसी को डिजीज नहीं है और आपके प्रिडिक्शन ने बोला कि उसको डिजीज है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग प्रिडिक्शन. दैट्स वाई इट इज रेड, दीज आर रेड रॉन्ग प्रिडिक्शंस. और किसी को अगर डिजीज नहीं है और आपके मॉडल ने भी बोला कि डिजीज नहीं है, दैट इज वेरी फाइन. सबसे डेंजरस होता है ये वाला, कि किसी को डिजीज था और आपके मॉडल ने बोला कि उसको डिजीज नहीं है. सबसे डेंजरस ये होता है क्योंकि इसको मिनिमाइज करना है आपको. जस्ट 1 मिनट. ओके. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी डेटा है. अमित, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना तो आई विल आंसर इट. ठीक है. आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन. वी विल कम बैक टू दिस precision. Okay, what is precision? So in next session we will do precision and rest of the thing. No, no, you can post in the group. I will answer. Okay. All right. Have a good day. Bye bye. I have to go.